finish doing the simple permanent tissue. The problem is that we have to know the secondary. One is meristematic and the other is permanent. Meristematic we already do with permanent में हमने simple permanent and complex permanent. Simple में we already done parenchyma. Mesenchyma and mesenchyma. Right? We had already discussed all three. हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि I think we were discussing about the sclerenchyma. कि sclerenchyma जो है it is present, it occurs in the hard seed coats, hard covering of the almonds, husk of coconut. जो एप्पल को हम बाइट करते हैं तो वो जो ग्रिट होती है ना, जो आवाज आती है, वो जो उसका जो प्रेजेंट है पल्प उसमें प्रेजेंट होता है, ग्रिट ऑफ एप्पल में, पियर में, गुआवा में. तो ऑल दैट इज sclerenchyma. अब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ sclerenchyma? Sclerenchyma जो है गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. It gives mechanical support to the plant parts. All right. Second thing you have to remember, it provides protective covering. जैसे seeds में होती है protective covering जो है, it is because of sclerenchyma. Sclerenchyma fibers जो होते हैं ना कुछ plants के, जैसे flax हो गया, jute हो गया, hemp हो गया, जिनके बारे में आप lower classes में already पढ़ चुके हैं, coconut हो गया, ये they are commercially exploited to make different products. तो वो सारी sclerenchyma ही है. ठीक है. So now you have to come to know about parenchyma, mesenchyma and sclerenchyma, which are simple permanent tissue. Now the second type of permanent tissue is complex permanent tissue. Until now हमने simple permanent पढ़ा था, and ये characterized थे having only one type of cells. All the parenchyma, sclerenchyma and collenchyma, they have only one type of cells. Plants जो होते हैं they possess complex tissue also, complex permanent tissue also, जो कि जिनमें कि ये differentiate इसी तरह होते हैं because they have different kinds of cells functioning in a coordinated manner. तो complex वाले जो होते हैं they have more than one type of cell. So complex permanent tissue को हम कैसे define करेंगे? It may be defined as a group of more than one type of cells having a common origin and working together as a single unit to perform a common function. मतलब function इनका एक ही रहेगा, function एक perform कर रहे हैं, लेकिन different kinds of cells है which are working in a coordinated manner to bring about a single function. So complex tissue जो है they are mainly concerned with transportation of water, minerals and nutrients and food materials. So the two important complex tissues, permanent tissue in vascular plants is xylem and phloem. आपने xylem और phloem के बारे में क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. क्लास 7th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. Both xylem and phloem together they are called as vascular tissue. इन दोनों को एक साथ vascular bundle या फिर vascular tissue भी कहते हैं. All right. It is together called as vascular tissue or vascular bundle. इनको conducting tissue भी कहते हैं. They are the ones which मैंने आपको बताया है कि they are the ones which are responsible for production of transportation of water, minerals and nutrients and food. तो इसीलिए इनको हम conducting tissue भी कह सकते हैं. अब आपने ये याद रखना है कि पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, देन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट फ्लोएम. तो जाइलम जो है इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ, इट इज द चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स. वैस्कुलर प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स, हायर प्लांट्स जिनमें कि वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है. इनके बारे में हम पढ़ेंगे
इन चैप्टर डाइवर्सिटी में, जहाँ पर हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, हाउ द प्लांट्स, हायर प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द लोअर प्लांट्स. तो these vascular plants में they are responsible for conduction of water and cells. So they are responsible for conduction of water and nutrients. कहाँ से करेंगे ट्रांसपोर्ट? They will transport it from the soil to all parts of the body, all parts of the body. And what is phloem basically doing before going to the their further division? Phloem is involved in transportation of food material. All right, so this is involved in transportation of food material. Asha ma'am, please allow me to share my screen. Okay, beta ji, now you can see here. This we are differentiating between xylem and phloem. Xylem and phloem. Xylem और phloem में पहला बेसिक डिफरेंस है कि xylem जो है वो वाटर और बाकी के न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को कंडक्ट करता है, जबकि phloem जो है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को यानी कि फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करता है. दूसरा ये देखिए, यू कैन सी इट हियर दैट xylem में देयर इज कंडक्शन. There is conduction mostly in one direction, that is upward direction only. ये arrow marks देखिए, this is in xylem only in upward direction from soil to all the parts of the plant. लेकिन conduction may occur in both the directions. ये देखिए, this and this, this and this. Can you see it? So it may occur in both the directions in case of phloem. Conducting channels जो है ना, यहाँ पर in case of xylem, you can see here there are different conducting types of cells. You can see here, this is transportation of water, this is transportation of glucose, and water is going to they are conducting, water is being converted, sent to even phloem also. ठीक है? तो अगर आप देखेंगे phloem cells में there are 4 types. ठीक है? There are sieve plates, sieve tubes, phloem parenchyma and companion cell. जबकि xylem में जो है, they have perforated plates, they have tracheids, they have fibers and they have xylem vessels. ठीक है? तो ये जो हैं basic components of phloem and xylem. phloem के केस में we have, you can see it here again, let me show you. phloem के केस में we have sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. All right, but in case of xylem, we will have xylem tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. So first let us study the xylem. ठीक है? Xylem पहले tracheids. Tracheids जो होते हैं, they are elongated tube-like, as you can see here, they are elongated tube-like, but they are dead cells. और इनकी oblique end walls होती हैं. ये they possess, there are certain pits present here. Pits मतलब holes. ठीक है? And their walls are very hard. Tracheids जो होते हैं. Vessels जो होते हैं ना, vessels जो होते हैं, इनको trachea भी कहते हैं. ये जो vessels होते हैं, they are placed one upon the other. एक ऊपर के ऊपर stacked होते हैं. आपके फिगर में आपके पास बुक में फिगर्स भी हैं. And they have end walls उनकी absent होती हैं, लेकिन they possess perforation, उनमें holes होते हैं. ये long tubes बना देते हैं for conduction of water and minerals, and they are found tracheids जो हैं are vessels together. उनको trachea elements भी कह देते हैं, tracheid elements भी कह देते हैं. उसके बाद में xylem parenchyma आ गया. Xylem parenchyma is not shown here. आपकी बुक्स में दिया हुआ है. ये सिंपल लिविंग parenchyma cells है present in xylem, and they help in lateral conduction of water and minerals. फिर आ गया xylem fibers. ये आप देखिए fibers हैं, and these fibers are
there is presence of lignin, deposition of lignin, ठीक है, and they provide mechanical strength to the plant body, क्योंकि जहाँ present है bark में, stems में, तो वहां पर mechanical strength की जरूरत है, that is provided by xylem fibers. Now next comes what is the function of xylem. We'll come to xylem functions little later. First let us discuss the phloem. अब phloem में sieve tubes पहले देखेंगे हम. sieve tubes जो होते हैं वो long tubular structures हैं, आपकी बुक में भी डायग्राम दिए हुए हैं. They are sieve tube elements जो एक दूसरे के ऊपर again stacked हैं. इनको sieve they have end walls जो sieve tube के हैं, they are called sieve plates also. और ये sieve plates जो हैं उनमें बहुत सारे pores होते हैं, holes होते हैं बहुत सारे. You can see these small. These are holes, and next आ गया companion cells. Companion cells जो है ना, they are living cells, and they are associated with sieve tubes. Sieve tube elements or companion cells, they are coming from the same cells. So इनका functional single functional unit है. Companion cell living होता है, thin cell इनमें thin wall होते हैं, cellulose wall होती है, and they have an active protoplasm. इसमें सारे सेल्यूलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दे आर ऑल हैविंग. एंड नेक्स्ट कम द फ्लोरम पैरेन्काइमा, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है लिविंग सेल्स होंगे, पैरेन्काइमा है तो लिविंग सेल्स होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज, अगर वो फ्लोएम में प्रेजेंट है तो उसको हम फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं. देन कम्स फ्लोएम फाइबर्स, दे हैव नॉट बीन शोन हियर. फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं डेड स्क्लेरनकाइमा फाइबर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन फ्लोएम एंड दे आर कॉल्ड एज फ्लोएम फाइबर्स. Now coming to what is the function of xylem and phloem. What is the function of xylem and phloem? तो सबसे पहला xylem का function, as we have already studied, कि xylem को होता है, it is the major conducting tissue. It serves in upward direction movement of water and minerals from roots to different aerial parts of the plant. ठीक है, मतलब रूट से पूरे पार्ट्स पे जाएगा. हाउ मच एवर द ट्री इज, इवन टॉलेस्ट से टॉलेस्ट ट्री के लास्ट जो टिप के ऊपर भी लीफ है वहां तक भी सारा वाटर ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू xylem. एंड दिस xylem is also providing mechanical strength to the plant body. मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो भी प्रोवाइड करता है because it is present in the stem. ठीक है, so ये जो xylem fibers होते हैं ना, they are providing they are helping the xylem to provide mechanical strength to the whole of the plant. अब आ गया what are the functions of phloem. Phloem we have already studied. Main function of phloem is to translocate the food material which is formed in the leaves by the process of photosynthesis, and that is being transported to all the regions, ठीक है, all the regions of the plant or tree. So it is mainly translocating food from leaves to the storage organs and later from storage organs to the growing regions. जहाँ पर growing tips होते हैं वहाँ पर चाहिए, because their cells are continuously dividing, तो वहाँ पर ज़्यादा amount of energy is required, so that they are transported to there also, to their to that part also. And this you must remember, these are the basic differences. आपने एक और बात याद रखनी है कि जाइलम जो है, कमिंग बैक टू द डिफरेंसेस, जाइलम जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने पढ़ लिए, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. जबकि उसमें इन केस ऑफ फ्लोएम इट इज sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. अब इसमें से आप याद रखेंगे कि sieve tube और companion cells and phloem parenchyma ये तीनों लिविंग है. ओनली phloem fibers are dead. ठीक है, phloem के केस में all the four में से only phloem fibers are dead, but in case of xylem, tracheids, vessels, xylem fibers are dead and only xylem parenchyma is living. वहां पर tracheids, vessels, fibers are all dead, only xylem parenchyma is living. Here only xylem, only one is living, rest are dead. They are only, all are dead, only one xylem parenchyma is living. Ab these are the basic differences, and these are the complex permanent tissues which are present in the vascular plants. You have to draw the diagrams of them in the book. All right,
जस्ट अ मिनट।